पार्श्वनाभ या सीलिया की संरचना। सीलिया की आधारभूत संरचना फ्लैजुलम की तरह यानी कशाब की तरह होती है। प्रत्येक सीलिया के चारों तरफ 90 एंगस्ट्रॉम मोटी झिल्ली का आवरण पाया जाता है, जो संरचना में प्लाज्मा झिल्ली की तरह होती है। झिल्ली के भीतर एक जलीय यानी एक्वस पदार्थ सब्सटेंस भरा होता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स के भीतर 9 परिधीय यानी पेरिफेरल एवं 2 केंद्रकीय यानी सेंट्रल या लॉन्गिट्यूडनल तंतुक फाइब्रिल की सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं। परिधीय तंतुक का व्यास 360 एंगस्ट्रॉम तथा केंद्रक का व्यास 150 एंगस्ट्रॉम का होता है। परिधीय तंतुक पुनः 2 उप तंतुकों के बने होते हैं, जिन्हें उपतंतुक ए व उपतंतुक बी कहा जाता है। जबकि केंद्रीय तंतुक एकल होती है। परिधीय तंतुकों के दोनों उपतंतुकों का एक बाह्य आवरण होता है, जिनसे वे ढके रहते हैं। यह आवरण 50 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। केंद्रकीय दोनों तंतुकों को भी एक सम्मिलित आवरण द्वारा ढका जाता है। यह आवरण 50 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। केंद्रकीय दोनों तंतुक भी एक सम्मिलित आवरण से ढके हुए होते हैं, जो 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। केंद्रकीय तंतुकों के बाह्य आवरण से 9 तीलियां यानी 9 स्पोक निकली होती है, जो परिधीय उपतंतुक ए तक पहुंचती है। The ultrastructure of cilia. The cilia and flagella have a fibrillar composition. At the base, the cilia has a diameter of about 0.2 microns, which may be up to 10 micron above the cell surface. The cilia are bounded by a unit membrane of 90 angstrom thickness, which resembles and remains continuous with the plasma membrane. The bounded space of the cilium contains a watery substance known as the matrix. In the matrix, there remain embedded 11 longitudinal fibrils or microtubules. Out of the 11 fibrils, 2 are located in the center, while
The remaining 9 fibrils remain arranged peripherally around the central fibril. Each of the 9 outer fibril is 360 angstrom in diameter and composed of 2 subunit fibrils of 180 to 250 angstrom in diameter. These subfibrils are designated as subfibril A and subfibril B. The subfibril A is slightly larger than the subfibril B. The subfibril A gives out two thick projection or arm from its one side. The arm of the subfibril A of all the outer fibril remains directed in clockwise direction. Further, the subfibril A occurs more closely to the center of cilium than subfibril B. The two central fibrils do not have paired subfibrils like the peripheral 9 fibril, but each contain only a single tubule. Each of the central fibril has a diameter of about 250 angstrom and is composed of 60 angstrom thick wall. Both the central fibril remain separated by the space of about 360 angstrom and remain enveloped in a common sheath. It has been reported that the sheath of the central fibril gives out 9 radially oriented link or spoke to each subfibril A. The high-resolution electron microscopy has revealed that each of the peripheral and central fibril of cilia and flagella is composed of 10 to 12 filament of 40 angstrom thickness. Each filament is beaded. Each bead remains arranged in the lattice of 40 by 50 angstrom in the plane of the wall of the tubule. These beads are considered as the basic subunit of the tubular structure. The infraciliary system is located below the pellicular wall or alveoli. It consists of the kinetosome or basal body and kinetodesma. The cilia arises from the kinetosome, and from each kinetosome arises a delicate cytoplasmic fibril called kinetodesma. Lying below the pellicle slightly to the right but joined to all kinetosome of one longitudinal row is a longitudinal bundle of several kinetodesmata. A kinetodesmata of each kinetosome extend for a distance anteriorly into its own bundle of kinetodesmata. The longitudinal row of kinetosome with their kinetodesmata forms a longitudinal unit called kinety. All the kinety makes the infraciliary system of a ciliate. This is the diagram where you can see the presence of the kinetodesmata,
the basal body or the kinetosome, the alveolar cavities, the ectoplasm, the inner membrane of the pellicle, outer membrane of the pellicle, circumciliary spaces, and cilia. You can also see the alveoli. In the ectoplasm is also present another sac-like structure called pomes. Lying below the pellicle, slightly to the right, but joined to all kinetosome of one longitudinal row, is a longitudinal bundle of several kinetodesmata, as I have just now shown you. The longitudinal row of kinetosome with their kinetodesmata forms a longitudinal unit called the kinete. The infraciliary system controls and coordinates the movement of the cilia, and it brings about the formation of organelle in cell division. For example, some kineta forms the mouth. In binary fission of ciliate, the kineta are cut transversely into two, each going to one daughter cell, and this is called the perichitinal fission. Trichocyst. Embedded in the ectoplasm at right angle to the surface are small spindle-shaped bags called the trichocyst. A small spot on each anterior and posterior margin of the hexagon marks the position of the trichocyst. They are filled with a refractive, dense fluid having a swelling substance. At the outer end is a conical head or spike. The trichocysts lie perpendicular in the ectoplasm. They open by small pore on the ridge of hexagonal areas of the pellicle. They arise from the kinetosomes of cilia, then migrate and locate themselves at equal distance in the endoplasm. पेलिकल की षटकोणीय संरचना के अग्र व पश्च सीमाओं पर ट्राइकोसिस्ट या दंशिकाभक के छिद्र पाए जाते हैं। इन काइनेटोसिस्ट की उत्पत्ति काइनेटोसोम से होती है। यह तरकु आकृति यानी स्पिंडल शेप के होते हैं तथा काइनेटोसोम से उत्पन्न होकर यह खिसक बीच में आ जाते हैं। इस तरह यह बहिर्द्रव्य के देह सतह की लंबवत स्थित होते हैं। आवश्यकता होने पर एक साथ अनेक ट्राइकोसिस्ट लंबे नुकीले धागे के रूप में
दागे जाते हैं। इनका कार्य संभवतः रक्षात्मक होता है। यह भी संभव है कि ये भोजन को स्थिर रखने व हमला करने के काम आते हैं। The trichocyst. Trichocysts are the organs or organelle for defense of the paramecium. It has been suggested that trichocysts may also be used to capture its prey. Now in this short video, I would like you all to observe how a paramecium throws its or eject out its trichocyst, which are in form of needle-like microscopic structures from their trichocyst sac, and how it uses it to capture its prey. As I have already mentioned before, the trichocysts are formed by the basal bodies or the kinetosomes, and these trichocysts then shift and assumes a perpendicular position in the ectoplasm. It shifts to the center from where it has been formed or originated and comes and lie in between the two basal bodies or the kinetosome, and we have seen in the diagram how they look like sac like और बैग लाइक स्ट्रक्चर। इस वीडियो में ट्राइकोसिस्ट द्वारा बाहर छोड़ी गई नीडल सदृश जो ट्राइकोसिस्ट है उसके बारे में दिखाया गया है। यह समझा जाता है कि ट्राइकोसिस्ट द्वारा छोड़े गए दंशिकाभाग अपने प्रे को स्थिर करने के लिए काम में लिए जाते हैं, अपने भोजन को स्थिर करने के काम में लिए जाते हैं, और यह समझा जाता है कि ये पैरामीशियम के रक्षात्मक अंगक हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि किस प्रकार से पैरामीशियम, जो कि यहाँ पर एक ओव्यूलर बॉडी के जैसे दिखाई दे रहा है, किस प्रकार से यह अपने ट्राइकोसिस्ट द्वारा, अपने दंशिकाभक द्वारा अपने भोजन को यह स्थिर करता है। ध्यान से इस वीडियो को आप ऑब्जर्व करिए।